Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम सुषमा। हेलो, थैंक यू राजेश, थैंक यू मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। At the stock market, Sensex zooms 1,564 points, Nifty shoots up 446 points. Rupee appreciates 51 paise against the dollar. Economic Advisory Council to the Prime Minister releases competitiveness roadmap for India at 100 in the capital. And the Reserve Bank imposes penalty on 8 cooperative banks for deficiencies in regulatory compliances. घरेलू शेयर बाजार में जोरदार लिवाली, सेंसेक्स 1,564 अंक उछला, निफ्टी 446 अंक ऊपर आया। $1 की तुलना में रुपया हुआ 51 पैसे मजबूत। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक की प्रतिस्पर्धी रूपरेखा जारी की और भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के अनुपालन में कमी के कारण 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। घरेलू शेयर बाजार में कल हुई गिरावट के बाद आज रुख पलटते हुए निवेशकों ने जोरदार लिवाली की, जिससे प्रमुख सूचकांक 2.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,564 अंक यानी 2.7% की शानदार छलांग लगाकर 59,537 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 446 अंक यानी 2.6% की जोरदार बढ़त लेकर 17,759 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चले तो वहां भी छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ा सा कमजोर प्रदर्शन देखा गया। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 2% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.4% लाभ के साथ बंद हुआ। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange zoomed 1,564 points or 2.7% to close at 59,537 today. The Nifty at the National Stock Exchange shot up 446 points or 2.6% to 17,759. In the broader market, the BSE mid-cap index climbed 2% and the small-cap index added 1.4%. Sectorally on the BSE, the realty index was the biggest gainer, surging 3.5%. The BankX jumped 3.3%, the finance index advanced 3.2%, the power and the utilities index added 2.8% each, the oil and gas index climbed 2.7%, the auto index rose 2.6%, the energy and consumer durable index gained 2.4% each, the IT index added 2.3%, the metal, the tech and the telecom index advanced 2.2% each. The FMCG index rose 2% and the industrials and the basic materials index gained 1.8% each. The capital goods index moved up 1.6% and the healthcare index added 1.3%. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 51 पैसे मजबूत हुआ, 79 रुपए 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सुषमा जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कल काफी बिकवाली रही, जबकि आज जोरदार लिवाली। क्या प्रमुख कारण आज की बढ़त के पीछे हैं?
देखिए, कल की जो गिरावट आई थी उसका उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, वो थी कि यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने कहा कि वो बहुत एग्रेसिवली रेट हाइक्स करेंगे और उनका फोकस इन्फ्लेशन के ऊपर है और वो जो इस वक्त रिसेशनरी कंडीशंस चल रहे हैं अमेरिका में उसके ऊपर नहीं है। तो ये, और उन्होंने ये भी कहा कि शायद किसी आपके घरों में भी तकलीफ हो सकती है इसकी वजह से। तो ये जो उन्होंने इतने ब्लंट कमेंट्स किए थे कल, तो उसका असर हमारी मार्केट के ऊपर भी, पूरे विश्व भर के मार्केट के ऊपर असर पड़ा और ये जो वॉलेटिलिटी है काफी थी ये मार्केट में, जैसे मैंने कहा अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो आज का रुख बदला है, इसकी वजह ये है कि मार्केट्स में ये जो फेडरल रिजर्व की जो बातें हैं, और वैसे भी पहले से ही फेडरल रिजर्व ने कहा हुआ है कि वो रेट हाइक्स करेंगे, ये मार्केट ने फैक्टर इन कर दिया। और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, इसके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त काफी पॉजिटिव हैं। अगर आप देखें तो कमोडिटी प्राइसेस इस वक्त कम हो रहे हैं, मॉनसून की स्थिति जो है अच्छी है, अच्छी कवरेज है, इनफैक्ट काफी जगहों में बाढ़ आई है, ज्यादा ही आई है, तो अच्छी प्रोग्रेस है मॉनसून की, क्रेडिट ग्रोथ की इम्प्रूवमेंट हुई है और इसका इस वक्त एक्सपेक्टेशन है कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं उनकी जो डेटा आने वाला है वो शायद अच्छा होगा। तो ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि अच्छा डिमांड आने जा रहा है फेस्टिवल सीजन के आने तक, तो इसकी जो सारे जो आंकड़े हैं इस वक्त जो ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट का मतलब वो जो हिल गया था कल, अब वो संभल गया है और मेरे ख्याल ये इसके बाद ये करेक्शन नहीं आएगी। Sushma, today's rebound indicates the domestic economy's resilience in comparison to its global peers. Do you agree with me? Yes, absolutely. Because you know the Indian stock market have really, as I said, I do not anticipate a further correction. We will have some volatility in the days to come. There will be news coming in. You will have some amount of volatility, but the rally that had begun in June, I think that is going to continue. And as you said, the resilience of first of all, of the Indian economy and the stock market. And one of the big factors behind that is the fact that domestic investors are playing a big role now, and they are placed their confidence in in a long-term outlook for the economy. And apart from that, you find that the FIIs are now coming back to India and they are reinvesting in the Indian stock market. So, and it seems that the FIIs are not so bothered about the current premium valuations, and they are aiding the domestic stocks to inch higher. Yes, in fact, there is, of course, a perception that stocks are overvalued in India right now. Despite that, there is the FIIs are coming back. There is a renewed interest. So, and that is because of the perception that the Indian economy has the potential to be one of the fastest in the world. The expectation is that it will be the fastest growing in the world this year. And plus, as I said, the other economic indicators are showing that we are going to have a very good festival demand. The demand, it looks as if corporate results which are going to come for Q1 may be quite positive. So these are all the factors that are obviously motivating FIIs to come back. And what about the investor sentiments? Are they not further boosted from dollar not moving above the 20-year high against major other currencies? And also the oil prices are coming off their highs. Well, you see, as far as the dollar is concerned... I'm primarily asking for the sentiments.
The investor that sentiment. Is, of course, these two factors I would agree are definitely also boosting investor sentiment. The fact that the dollar, as well as the fact that crude prices have stabilized, except that, of course, last week they went up, but they have stabilized, to around $100 per barrel, which is quite moderate from what it had been earlier. सुषमा जी, हम आपका ध्यान रुपए की ओर ले चलना चाहेंगे। रुपए में कल हमने बड़ी गिरावट देखी थी और 80 रुपए से ऊपर पहली बार स्तर चला गया था। किसके ऊपर लाएंगे? सॉरी, मैंने सुना नहीं। हेलो जी, हम ये समझना चाह रहे थे आपके माध्यम से कि रुपए में कल हमने गिरावट देखी थी, ये 80 से ऊपर चला गया था, जबकि आज इसमें 51 पैसे की मजबूती आई है। तो आज की मजबूती के पीछे रुपया जो मजबूत हुआ है, उसका कोई खास कारण आपको दिख रहा है? देखिए, उसका कारण वही है जो मैंने बातें अभी की हैं कि जो मजबूती ये हमारी इकोनॉमी की है, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी रुपए के बारे में जो असेसमेंट है कि अभी भी ये ओवर वैल्यूड है और शायद ये और थोड़ा गिर जाएगा, और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद 80-81 तक ये चला जाएगा। और लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने ये तो फैसला किया है कि अगर रुपया धीरे धीरे अपने सही स्थान पे पहुंच जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल क्रैश नहीं होने देंगे, प्रेसिपिटस डिक्लाइन नहीं होने देंगे। और अगर डिफेंड करना है तो आरबीआई के पास काफी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं अगर उन्होंने करना है। लेकिन इसमें ये है कि जो किसी भी करेंसी के बारे में अगर जो नेचुरल मार्केट फोर्सेस हैं इसको नीचे लाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और 80-81 तक धीरे धीरे अगर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए ये फायदेमंद ही होगा, और खैर इंपोर्ट्स के लिए तो डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। Do you think, Sushma, the China story may now be facing clear headwinds? And do you think India is likely to benefit from such stark realities over the longer term? Well, I think longer term is the right word, because immediately I don't think that India would benefit from the headwinds that China is facing. China continues to be a formidable economic player. It is facing difficulties just now largely because of COVID and the fact that they have had to curtail movement, and they have imposed stringent curbs in areas where you have manufacturing facilities. But there is no doubt about it that China retains its status as the world's most powerful economy, along with the United States. So in the long run, yes, as you said, India could benefit, but I think that, and we are already benefiting in the sense that some companies have decided to shift from China and they are coming to India, and notably, of course, Apple. Apple is trying to shift its manufacturing facilities to India, which is a big plus point. But there are other companies, we have to remember, which are shifting from China but not coming to India. They're going to Indonesia and Vietnam. So therefore, the Indian ecosystem has to improve the ease of doing business, which has already improved considerably, but I think it needs to improve somewhat, in a somewhat more rapid fashion. Okay. Sushma, coming back to the Indian markets, today's rise in key indices was broad-based, but a few BFSI stocks, they contributed over 250 points positively to the index rise. So what could be the factors? What could be the reasons for these bank stocks to do so well? Well, the bank stocks have been doing well for quite some time, and I think that is because banks are central to the economy.
And also the banking sector performance has improved dramatically over the last probably 2 years. The level of NPAs has come down. The mergers that the government has announced have streamlined the public sector, plus the decision to go ahead and privatize, which has actually not happened, but the process apparently is going on. So the banking sector has the financial parameters have definitely improved. And as I said, banking is central to economic growth. यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। निवेशकों के बीच एक ओर अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की संभावना, वहीं दूसरी ओर मंदी आने के आसार का मिला जुला प्रभाव आज दिखा। एक निवेशकों के समर्थन से जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज 1.1% लाभ के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% ऊपर आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% घाटे में रहा। चीन में कोविड-19 के मामले बढ़ने से कुछ और शहरों में प्रतिबंध सख्त किए जाने संबंधी खबरों से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। चीन में आर्थिक गतिविधियां कमजोर पड़ने की आशंका से बिकवाली के कारण वहां के शेयर बाजार घाटे में रहे। उधर हांगकांग का हिंगसेंग भी 0.4% नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां तेजी दिख रही थी। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.1% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 1.2% की वृद्धि थी, जबकि जर्मनी का डेक्स 1.9% फायदे के साथ कारोबार कर रहा था। U.S. stocks closed lower yesterday on nagging concerns about the Federal Reserve's determination to aggressively hike interest rates to fight inflation, even as the economy slows. On Friday, Fed Chair Jeremy Powell had said the U.S. economy would need tight monetary policy for some time before inflation is under control, dashing hopes the Fed might pivot to more subdued rate hikes after recent data suggested price pressures were peaking. So the Dow Jones Industrial Average fell 184 points or 0.6% to end at 32,099. The S&P 500 lost 27 points or 0.7% to close at 4,031, and the Nasdaq Composite dropped 124 points or 1% to 12,018. The CBOE's volatility index, Wall Street's fear gauge, hit a 7-week high of 27.67 points. Money market traders are pricing in a 72.5% chance of a 75 basis point interest rate hike at the Fed's September meeting, which would be the third straight hike of that measure. The 2-year Treasury yield, which is particularly sensitive to interest rate expectations, briefly touched a 15-year high, while the closely watched yield curve, measured by the gap between 2- and 10-year yields, remained firmly inverted. An inversion is considered by many to be a reliable signal of a looming recession. So, Sushma, my question is based on the last sentence I read out. Is there a looming recession on the anvil for the U.S.? Well, it does look as if there is a looming recession on the anvil there. We have to accept that the American economy has been hit by the Ukraine war, the ripple effects of the Ukraine war, the global supply chain disruption,
and the increase in global oil prices. These are all factors that have shaken the U.S. economy. And definitely there is that the inflationary aspect is something, of course, that the Federal Reserve is going to tackle first. They are not worried. They have that's what they have said. They are not worried about this particular aspect that you have talked about, the fact that recession looms. They are worried about inflation, because that is, of course, quite amazingly at a probably 40-year high. So this is something that is of concern, and definitely it does look as if the U.S. is heading in that direction. But I would anticipate that the Federal Reserve, those who are managing the economy in the U.S., would be able to manage the situation successfully. Moving on, the Economic Advisory Council to Prime Minister, EAC-PM, today released the Competitiveness Roadmap for India at 100 in New Delhi. The document was released in the presence of Chairman EAC-PM Dr. Bibek Debroy, India's G20 Sherpa Amitabh Kant, member of EAC-PM Sanjeev Sanyal, and Dr. Kristen Kettles from Harvard Business School. In his address, Dr. Debroy stated the importance of looking at economic trends to ascertain what India needs to do to be a highly prosperous country by 2047. He said consumption, investment, government expenditure, and net exports are the real growth drivers. The chairman of EAC-PM said there are 4 ways to analyze economic growth: slicing the drivers of growth, sectoral slice, looking at factor inputs, and regional disparity. He said since 2014, government have been taking several steps to remove inequity and inequality through different schemes like aspirational district programs and Ujjwala. Dr. Debroy said if India's development trajectory has to emerge faster, higher and stronger, both government policies and the enterprises and markets functioning in the environment set by the former are of great significance. ये प्रतिस्पर्धी रूपरेखा आर्थिक सलाहकार परिषद संस्थान के डॉक्टर अमित कपूर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर और डॉक्टर क्रिश्चियन केटल्स के सहयोग से तैयार की गई है। इस रूपरेखा में वर्ष 2047 तक भारत को उच्चतर आय देश बनाने के उपाय और दिशा निर्देश तथा इस संबंध में जागरूकता फैलाने के बारे में जानकारी दी गई है। ये रूपरेखा सामाजिक प्रगति और साझा समृद्धि में अंतर्निहित स्थिरता और लचीलापन की दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत लक्ष्यों, सिद्धांतों और दृष्टिकोणों का प्रस्ताव करती है। सुषमा जी, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम कह लें कि साल भर लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं और इसी क्रम में जब एक कह लें कि शताब्दी हम पूरा कर रहे होंगे, 100 साल हमारी आजादी को हो रहे होंगे, तो हम किस रूप में जो अपनी आमदनी बढ़ा सकें और उस दिशा में आगे बढ़ सकें, उसके लिए जो यह प्रतिस्पर्धी रूपरेखा सामने रखी गई है देश की, वह किन अर्थों में आप ले रही और ये कहां तक सहायक होगा देश को आगे बढ़ाने में? देखिए, ये मेरे ख्याल में ये जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, ये मेरे ख्याल बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये काफी चीजों को कवर करता है। जैसे कि डॉक्टर देब्रॉय ने बोला कि इसके जो बहुत काफी क्षेत्र है जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें जो है, तो उसका अगर हम एडवांस प्लानिंग करें, अगर फ्यूचर प्रोजेक्शंस करें, तो इससे हमारी जो अभी की जो नीतियां हैं उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं और वो नीतियों को हम बदल सकते हैं ताकि वो हमारा देश ज्यादा कम्पिटिटिव बन जाए। और ये बहुत जरूरी है इस वक्त। अगर हम जैसे कि अब अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो एक्सपोर्ट्स में इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी से चल रही है, ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया है ये अभी 1-1.5 साल से। लेकिन
आगे वाले दिनों में कम्पिटिटिवनेस, अगर हमको कम्पिटिटिव रहना है पूरे विश्व भर में, तो हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे हमारी सारी जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी एक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, और हम बाकी देशों के मुकाबले में हम compete कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये जो रिपोर्ट बनाई है इन्होंने, ये बहुत ही वैल्यूबल है, और इसके ऊपर काफी मेरे ख्याल में सरकार को मतलब इसके बारे में सोचना चाहिए, और इसके बेसिस के ऊपर हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं उनको फॉर्मुलेट करने चाहिए। So what I understand, Sushma, you are saying that the real growth drivers that the report is talking about, consumption, yes, investment, government expenditure and net exports, yes, these are the four drivers on which our future policies should be based on, or yes, giving impetus to all these four factors so as to achieve what we have defined for India at 100. Yes, not only that. I mean, we have not, of course, the event has only talked, and Dr. Dev Roy has talked about these four drivers, but he has not given the details of the report. Now, I'm sure the details of the report will give you an indication as to what kind of policies we should lay down in future to remain competitive. Over the next, we are now in our 75th year of independence. In the next, another 25 years, what we should do to achieve our, better competitiveness globally. Okay. So this would be contained in the report, and I think that needs to be studied very carefully by the government. Okay. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के अनुपालन में कमी के चलते 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। विशाखापत्तनम सहकारी बैंक पर सबसे अधिक जुर्माना लगा है। आरबीआई ने अपने वक्तव्य में कहा है कि आवासीय योजनाओं में आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और वित्त सहित विभिन्न प्रावधानों में अनियमितता बरतने के कारण विशाखापत्तनम सहकारी बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह प्रत्येक मामले में नियमों के अनुपालन में कमी के कारण अलग अलग सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। Global crude oil prices fell today on fears that an inflation-induced weakening of global economies would soften fuel demand, and as Iraqi crude exports have been unaffected by clashes. So the Brent crude futures for October fell $2.45 to trade at $102.64 a barrel. The U.S. crude futures lost $1.55 to $95.46 a barrel. आइए अंत में चलते हैं सर्राफा बाजार की ओर। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। आज सोने का मूल्य दिल्ली सर्राफा बाजार में 66 रुपए घटा 51,469 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी 4 रुपए उछलकर 55,550 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य $1,738 के आसपास चल रहा था, जबकि चांदी $18.81 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Manoj. Thank you for being with us, Sushma. And before we close, the headlines once again. At the stock market, Sensex zooms 1,564 points. Nifty shoots up 446 points. Rupee appreciates 51 paise against the dollar. Economic Advisory Council to Prime Minister releases competitiveness roadmap for India at 100 in the capital. And the Reserve Bank imposes penalty on 8 cooperative banks for deficiencies in regulatory compliances. इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। श्रोताओं की ओर से अब हम विदा लेना चाहेंगे। And that's all.